How are you? I hope all are good. So today let me start SST chapter number 4, the modern period. मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक समय की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. प्लानिंग आउटकम्स इज एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड, द चेंजिंग nomenclature of the subcontinent and its regions, major developments during the 18th century, sources of history. So let me start. History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? जो हमारा इतिहास है हमें बताता है कि पहले समय कैसा था और अब समय कैसा है. History is a continuous flow of events that cannot be divided into clear-cut or watertight compartments, but historians have divided it into ancient, medieval and modern. है ना? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. However, the duration of these periods is different in different parts of the world. The modern period began in Europe in the 16th century. तो मॉडर्न पीरियड कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से 16वीं सदी में. एज अ रिजल्ट ऑफ द रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द 15th century, बट इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द 18th century ओनली. तो इंडिया में कब आया ये मॉडर्न पीरियड? 18वीं सदी में, 18th century. ठीक है. एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू अ नंबर ऑफ autonomous states and at the same time the British were rising to power. अब क्या हुआ? जब मुगल शासक जो है, मुगल शासन का अंत हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया? अपनी पावर यहाँ पे दिखानी शुरू कर दी. In between, the Marathas were trying to emerge as the political heir of the Mughals, but they fell a victim to their ambitions and were subdued by the British. अब क्या हुआ? मराठाओं ने सोचा कि अब तो ये मुगल शासक का अंत हो गया, मराठाओं ने जो है चीजें सही करनी चाहिए, अपना जो है रूल रेगुलेशन चलाने चाहिए, लेकिन ओवर पावर कर लिया इंडिया को किसने? ब्रिटिश सरकार ने. द 18th century was a period of great political. जो 18वीं सदी है ना, उसमें जो है बहुत बढ़िया तरीके से राजनीति आई और इकोनॉमिक्स स्टैग्नेशन इन द कंट्री. द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर आर्च राइवल्स इन ट्रेड एज वेल एज इन पॉलिटिक्स. ठीक है ना? तो इंग्लिश और फ्रेंच आर्च राइवल्स इन ट्रेड एज वेल एज इन पॉलिटिक्स, राजनीति में. ठीक है. द थ्री कार्नेटिक वॉर्स डिजर्व्स इन फेवर ऑफ द इंग्लिश who completely routed the French. Between 1757 and 1857, the English stamped their authority over Bengal and Awadh, subjugated the Marathas and the Sikhs, and conquered Burma and Sindh. So, the British rule in India had great social. तो जो ब्रिटिश शासन था वो भारत में क्या लाया? एक सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स. तो हमारी जो संस्कृति पे है ना, हमारी आर्थिक व्यवस्था पे और हमारे समाज पे इसका बहुत गहरा असर पड़ा. इट लेड टू वेरियस सोशल, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कल्चरल रिजनरेशन. द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड द इंडियंस टू वेस्टर्न साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर एंड थॉट and gave rise to the high ideals of liberty, equality and fraternity in them. The spirit of nationalism pervading the entire world aroused the Indians also. At the same time, exploitation and discrimination created utmost dissatisfaction among all the sections of society. The revolt of 1857 almost shook the foundations of the British Empire in India. The company's rule came to an end. The political power was transferred to the crown in 1858. The struggle for national independence began in 1905. The period between 1919 and 1934 is known as the Gandhiana era of mass movement. Gandhi ji led the non-violent national movement against the British rule. क्या लाए फिर वो? अपना non-violent, अहिंसा का, है ना. उन्होंने अहिंसा की पोथी बांटनी शुरू कर दी उस ब्रिटिश सरकार के सामने, लेकिन वो सुनने वाले थे. Some revolutionaries also made significant contribution to their freedom struggle. तो बहुत से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका योगदान रहा. ठीक है, हमारे देश को आजाद कराने में. किससे? ब्रिटिश सरकार से. ओके. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, Indians began the task of national
रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी हम भारतीयों के सामने जब अंग्रेज सरकार से आजाद हुए, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि देश को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है और कैसे इसको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है और इसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधारनी है। इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक पीपल ऑन 26 जनवरी 1950। Integration of states into the Indian Union was ensured by Sardar Patel. A recognition of states was done in various phases to fulfill regional aspirations. Since independence, India has treaded on the path of peace and progress. Today, India is a fast developing country with a sound economy. ठीक है? The changing nomenclature of the subcontinent and its region. The Indian subcontinent, comprising the modern countries of India, Pakistan, and Bangladesh, formed the British Indian Empire until partition 1947. Myanmar, known as Burma, and Sri Lanka, known as Ceylon, were a part of the British Empire in Asia until 1937. The India Independence Act 1947 partitioned India into two parts: the province of Baluchistan, Sindh, and NW frontier provinces went to Pakistan, while Punjab and Bengal were divided between the two dominants of India and Pakistan. The Muslim majority areas of these provinces were given to Pakistan. Sir Kirk Radcliffe drew the boundary lines, the two parts of Pakistan, West Pakistan और East Pakistan. क्या बना दी थी उसने? बाउंड्री लाइन बना दी थी, lay on two sides of India. Later in 1971, East Pakistan separated and emerged as an independent nation of Bangladesh. और वो पाकिस्तान हमें आज तक दुख दे रहा है। Major developments during the 18th century. तो जो विकास हुआ था 18th century में, क्या बहुत मेजर विकास था। The 18th century is regarded as the darkest period in Indian history. जो 18th century था वो सबसे डार्केस्ट समय था भारतीय इतिहास में। औरंगजेब डिमाइज इन 1707 marked the end of the reign of the great Mughals. There were several spontaneous revolts of the Rajputs, Jats, Bundels, Satnamis, and the Sikhs. The rise of the Marathas in the Deccan shook the foundation of the Mughal Empire during the reign of Aurangzeb himself. The invasion of Nadir Shah 1739 disintegrated the Mughal power. Ahmad Shah Adali's invasions 1748-1757 and the Third Battle of Panipat 1761 proved disastrous for the Marathas and weakened the Mughals further. It gave a chance to the English East India Company to tighten its hold on Bengal and pave the way for establishing the British power in India. Taking advantage of the weakness of the Mughal Empire, Bengal, Awadh, Hyderabad, Rohilkhand, Mysore, Rajputana, etc. became autonomous. The three Carnatic Wars 1744-1763 proved decisive for the English. The political instability in India gave rise to rivalries among European trading powers attempting to gain hold over the country. It adversely affected India agriculture, handicraft, and trade. Forms of art also suffered a lot. The English took the Indian trade into their hands. They ruthlessly exploited the Indians and utterly ruined the artisans and craftsmen. Sources of history. The source materials for the study of the modern period are categorized as primary and secondary. ठीक है, तो प्राइमरी क्या है? The primary sources of comprise original documents and literary evidences. प्राइमरी सोर्स क्या है? जो एविडेंस है, जो लिखित रूप में प्रस्तुत है। Archaeological remains, audio, cassettes, film, video tapes of incidents and interviews of important personalities, etc. are also the primary sources of modern history. है ना? अब स्टेट एंड नेशनल आर्चीव्स प्रिजर्व दीज सोर्सेज। और सेकेंडरी सोर्स क्या है? द सेकेंडरी सोर्सेज comprise of the works of great historians and scholars, articles, revives, books and newspapers. ये सेकेंडरी है, ठीक है। Such books and written records are available in various libraries. जो ये चीजें अभी भी लाइब्रेरीज में, म्यूजियम में मौजूद हैं।
So it's time to workstation. Tick the correct answer. Historians have divided history into 3 periods. The foundations of the Mughal Empire were shaken by the invasion of, and question number 2, the foundations of the Mughal Empire were shaken by the invasion. This is Nadir Shah. This battle of Panipat proved disastrous of the Marathas, and this is the second battle. जो second battle हुआ था ना वो. The English East India Company's rule in India ended in East India Company 1857 से विद्रोह शुरू हुआ था 1858. Now next question, fill in the blanks. The company's rule came to an end in 1858. Archaeological remains from the dash source of modern history. Primary. The revolt of dash almost shook the foundation. 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था of the British Empire in India. Dash drew the boundary line between India and Pakistan. Who? Sir Cyril Redcliffe. Cyril Redcliffe. Okay. Number C, write 2, T for true and F for false. So, the modern period in India began at the same time as in Europe. Number 2, the modern period is said to have begun in Europe in 16th century. True. The 3 Carnatic Wars proved decisive for the victory of the English over their French rivals. True. Burma and Ceylon formed part of the British Empire until 1937. True. Now matching. Match the column A with column B. So, in 1971, this is C. East Pakistan emerged as an independent nation named as Bangladesh. Okay. Number 2, the period between 1919 and 1934, this is known as the Gandhian era of mass movement. Okay. Number 3, 1761, this is third battle of Panipat. And 26 January 1950, India became a sovereign democratic republic. है ना? Republic डे होता है ना उस दिन 26 जनवरी को. So, answer the following questions. When did the modern period start in India? Mid 18th century. ठीक है ना? Mid 18th century के mid में उसको modern period बोला जाता है. What are the primary source of modern Indian history? तो primary source are, देखिए यहाँ पे mention, these are the primary source comprise original documents, archaeological remains, audio, cassettes, films, videos, tapes of incidents and interviews of important personality, etc. तो ये कौन से source है? Primary source है. Next question, when did India become a republic? 26 January 1950. Okay, 26 जनवरी 1950 को. Name the secondary sources of modern Indian history. ये देखिए यहाँ पे secondary sources. ये वाला ठीक है. The secondary source comprise of the work of historians. क्या थे? आर्टिकल, रिव्यूज, बुक्स, न्यूज़पेपर, है ना? बुक्स जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स थे, वो था secondary source. Answer the following details. Give an overview of the modern period in India. ये भी उसमें दिया गया है ना, उस बुक में. ठीक है. आप ये वाला जो हेडिंग है मॉडर्न इंडिया पे क्या लिया इन्होंने? एक ओवरव्यू मांगा है. ये वाला, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये इसमें मेंशन हो जाएगा. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर. ठीक है. यहाँ से कब से? मिड 18th सेंचुरी से जो है उसकी मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई थी. नेक्स्ट है आपका थ्रो सम लाइट ऑन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. औरंगजेब के बाद क्या हुआ
था, ये डिक्लाइन हो गया था, ये भी यहाँ पे मेंशन है चैप्टर में। डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आप मेंशन कर देना इसमें, ठीक है। ओके, सो all topics are covered in this chapter. I hope you all very well enjoyed and understand this chapter. Thank you.